Well, ready? See how many types of goods are there? Known 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and that side 6. We have how many? 12. But in exam you are getting other than these goods. So you also have to remember other goods than this list. That is there you can see other goods, given goods, rare goods, substitute goods, prestigious goods. এটা টাইপস অফ গুডস চ্যাপ্টার ভিতরে আইবনি বাহারে মঝিরে মঝিরে আসছে এই যাক সে কোন করছে 2 মার্ক আরে পকাউছে so you must be very much careful about it. So now see what are the first. So here we will study about the lesson, study the lesson with the tricks. What trick? Now one side if I explain, other side you have to tell me. नले तुम पढ़ी की जाइथिबो फ्री गुड्स परीक्षा रे भाइबो भारे आसीबो इकोनॉमिक गुड्स लेखिबो केमती. दैट इज द ट्रिक आई विल टीच यू नाउ. कोन कहली बुझि पाला ना? तुम पढ़ी की जाइथिबो कंज्यूमर गुड खाउटी द्रव्य परीक्षा रे आसीबो उत्पादक द्रव्य तुम लेखि आइबा छी. हाउ इज दिस पॉसिबल? यू मे बी थिंकिंग लाइक दिस. दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग हियर. आई रे 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क पार्थक्य दर्शाओ. ऑल विल बी कवर्ड. And correct the error. जो तुमको 15 मार्क आउची ना भ्रम थिले भूल थिले ठीक करो. That will also be covered by this. Okay. So now look at this. First focus on the meaning of the points. Meaning definition अलगा रे मन रखो. What is free good? What is economic good? मन कराइला तो तुम definition लिखिबो. बोल रे what is free good? Goods which are एक बार पढ़ो तो भाई टाइम ही लगी. The goods which we get freely, free goods, and the goods which we get with some payment, that is economic goods. तापर एपट गुड एग्जांपल सेपट गुड एग्जांपल देखो. फ्री गुड्स रो एग्जांपल कोन लिखिबो? वाटर एयर सनशाइन. यस. इकोनॉमिक गुड रो पेन पेंसिल डायमंड गोल्ड एक्सेट्रा. सिट डाउन. One is natural, another is artificial. Free goods प्रकृति रे आसीबो. सूर्य किरण तू तैयार कर दबो ना मु तैयार कर देबी. वर्षा जल तुमे कर दबो ना मु कर देबी. बाय नेचर. किंतु डायमंड रिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स के तैयार करछि? We. So that is economic goods are man made. Free goods are natural, economic goods are man made. Move to the fourth point. Which is wealth? Free na economic? So all economic goods are wealth, but free goods are not wealth. केतरा पॉइंट हला? 4टा पॉइंट. 5 नंबर पॉइंट के कहबो? 5 नंबर पॉइंट. Oh, free goods. अरे तुम खंडिया खंडिया कोई कहले कोन हो? तुम वाक्य तैयार करिया जानिबा छै ना तरतर हो जाउ छ तुमे. हां दिस सिमिति फ्री गुड्स आर लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं. सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स आर अनलिमिटेड. सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक गुड्स आर लिमिटेड. तापरे फ्री गुड्स हैज वैल्यू इन यूज, हाई वैल्यू इन यूज, but no value in exchange. But economic goods have both value in use and value in exchange. You have to remember this. 6टा पॉइंट हला ना नहीं. एबे गुटे साइड रो ऑपोजिट रे से साइड जाउची. इटा तुम अनुमान कलो कि नहीं कि नले तमर पाठ वेस्ट. तुम केते पढलो इंपोर्टेंट नहीं. तुम केते ब्रेन खर्च करि पारतो गुटे पाठ पछरे, दैट इज इंपोर्टेंट. केते ट्रिक्स तुम अप्लाई करि पारतो, दैट इज इंपोर्टेंट. हाउ मच यू आर laboring like a laborer don't want. I want you should be engineers. नहीं रे? Yes sir. Laborer दिन जा काम कल 200 टका मिलियो. इंजीनियर टिके आसिक गुटे सेकंड काम कर देल 200 टका मिल जाओ. सेकंड 24 आवर्स रो वैल्यू देखो. It's only because of the tricks. Ready? So when I tell you about free goods, you should able to write economic goods. मु मुक्त द्रव्य कहिदेली बेले तुमे अर्थनैतिक द्रव्य लिखि दबा अछि. गुड पिला लिखि दबो. जे जानि दबो जे एटा तार विपरीत बोली. विपरीत शब्द बुझुनी कि तुमको लिमिटेड बोल लिखले अनलिमिटेड लिखले बोले से लिमिटेड लिखिबो.
all free goods are not wealth bole economic goods are wealth not logai dele siti hegala difference. Oh, watch the things very closely, find the differences by opposite sense. You can do this, no need of by hearting things. Move to the next one like this. देखो मु तुमको ଏବେ consumer goods ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଁ ତାର ଫିଚर्स କହିବି ବୋଲେ ତମେ ତାର opposite କହି ଦେଇପାରିବା ଅଛି. That satisfy human want directly कोटा consumer goods हेले opposite टा कोन हो satisfy human want indirectly. Only one word you have to change. Directly काट दो, indirectly भर दो, over. प्रत्यक्ष भाव हेले परोक्ष भाव. For example मन रखि परियोनी कि बुक पेन पेंसिल तार एग्जांपल कोन ट्रैक्टर फर्टिलाइजर. Next question to you, between them which is capital? Producer goods. Right, one side बुझी गेला producer goods are capital बोला अन्य साइड ता तुमको ऑटोमेटिकली बुझी गेला not capital, but both are wealth. Remember this, उभयजाक संपत्ति का both are wealth, but capital is only producer goods, not the consumer goods. एमती मन रखियो अछि. Next move to the material and non material good. देखो good side कहले आ good side मन पड़ जिवो. Which we can see, touch and feel ki good material हेले non material good मु पचारिबनी which you cannot see, touch and automatically बुझी गेला. एग्जांपल आटे चलो आर एग्जांपल बेसी इंपोर्टेंट non material good रो. हां all services goods होची आर एग्जांपल, material goods रो services होची तार एग्जांपल non material good रो. Got the point now? Move to next, public and private goods. तीनटा पद इटे मन रखियो अछि ऑन दुईटा का पॉइंट होछि, दुईटा का पॉइंट होछि भाबिले और पॉइंट बाहर होछे. So public goods owned, managed and controlled by public or government, so the public good, government schools, colleges. Private goods तार opposite, owned, managed and controlled by person. गुट्टे का पद मन चेंज होछि थी गवर्नमेंट काट देकी पीपल लगे देले प्राइवेट हे गेला. Getting the point now? Yes, sir. Our second point अछि कोन not divisible. Public goods are not divisible. मु गुटे पॉइंट कहली कोन कहली public good कहली तुम private good को divisible. It is not divisible, it is divisible. Just the opposite you remember, things will be all right. Finish one side, write another side. Intermediate goods, the goods which help to produce final goods. Last for long time. Neki? Final goods are what? Those goods which are ready to sell and use. Example तो दे दो गुटे point. Third point कौन लिखिबो? Example रे ये intermediate goods वाले raw material से pen, pencil, other finished goods. Right? Iron ore, intermediate good. Iron, finished good. Iron rod, that's good. Finished na intermediate, finished good. Iron wood difference हो. National income accounting रे इटा को नेबे ना नेबे नहीं intermediate good को. Finished goods are taken into account, intermediate goods are not taken into account. It's a point. Difference between that. So meaning good point, example good point, out taken into account in national income, not taken into account in national income. Good point. Over. Perishable and durable good. Lasting ऊपर निर्भर हो. इटा कौन short lasting. से कौन होगा long lasting. Just remember the opposite. Our example, तार example लिख दो. Okay? Yes, sir. Next you see other जो goods रोइला कौन कौन defense goods, rare goods, substitute goods, prestigious goods. एटा को कौन तार definition पाइन तमे मन रखले हला ये दुई दुई मार्क. example meaning आंको सेति गायबो एमान 3 मार्क आइबो ने ये पार्थक्य दर्शाओ का 3 मार्क आइबो. एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न विषय मध्ये तुमको धारणा थिबा अछि. Okay students, this is all about the goods which have opposite relation. Remember and read accordingly. Thank you. Goodbye. Bye sir.